तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra.
Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Aham Brahmasmi. So, good evening, everyone. स्वागत है आप सभी का. And good morning to the people, those who have joined us from different time zones, and good afternoon. So good to see you all here, and good to see that Shiva Guruji is already ready with his question. Wow. So people, good. So let's begin then. Instead of waiting, Hari Bhai, let's go with the rapid fire then. Yes, Shiv Guruji, please unmute yourself. Namaste, Guruji. Namaskar. The intelligence and devotion are essential for the spiritual growth. Yes. But I find in actual life, some persons who are really very good, having a service mentality and helping, innately they are good. They know they are, but they are either they are atheist or they don't want to take a spiritual path. Yet the grace, how grace will work on them. I'm thinking that only with the devotion and intelligence only grace helps. With the help of grace only, we are uplifting ourselves into the spiritual growth. But for them also, how the grace is going to work. I just want your clarification. Amazing. That's a beautiful question. Thank you, Shiva Guruji. So how does grace work on people, those who are not on the path of spirituality, or rather are more problematic in that sense, right? Yes. See, we don't have to run far. The answers are very clearly depicted in all our itihasa. That's Ramayana, Mahabharata, whatever you see. The reason I call it as itihasa because now there are geographical proofs that these things exist. So that's why I'm calling it as an itihasa, not a mythology anymore, because the dates and everything is specified. Now, consider this. What good things have those demons done that the Lord has to come to kill them? Can you see there is one kind of grace there also? The answer would be in a very simplified way. Have you seen movies? Yes. Okay. Which one is your favorite one, at least, or that you like? It is Ramayana, the Mahabharata in which Karnan was there. Okay. I like Karnan. Any modern movies? Modern movies, The Matrix. The Matrix. Okay, so there is somebody called as Neo, and there is other person in the black suits, right? Yes. So can you tell me who has done a good acting there? Neo? Is the hero has done a great acting or the villain has done a good acting? The villain has done a good acting. Wow. So he should be getting some awards for that, right? Yes. Is this grace? He's a bad guy and he get awarded. Yes. What would you call that? Can you see what we forget? That it's not about what is good and bad. If you really go beyond this
concept of duality of good and bad. There is nothing called as good and bad, and all that we are doing is just playing a role here. And if a villain has done a great job, he gets an award for that also. A hero has done a great job, he also gets the award for that. Now, if you are a director, can you tell that no, only the favorism should be done to the hero? And you say, okay, let me only give the payment to the hero because he has acted as a hero, but I will not pay anything to the villain. As a director, No, will it as work? a director, no, he is equal to everybody. It won't work, right? Can you see? That is the balance. Just think of a movie without a villain. Think of Ramayana without Ravan. Good? Yes. Can you see? They are the balancing things out there. So it's not about, we always think from a minuscule point of view of mind. And that's why we say, why bad people are getting this, why good things are not being, and how does these things are. Can you see? All the good people are going through pain and all the bad people are enjoying the show. They have taken the villain role, you see. And obviously we'll see one amazing thing, Shiva Guruji. If anyone in the corporate world in this room, you should not follow a hero, you should follow a villain. I don't say like you should act like a villain. I said follow the villain. You know why? Just think what I'm saying right now. You will get so much of clarity on that, how you should become a great manager of the things. See, the villain is never alone. It has a great following. A hero? Only one person fighting. Now tell me, can you run a big team if you are just one? No. You should be a team player. So a villain is a team player. And look at it again. If you look at the villain, if he says somebody to die, they are ready to give their lives. But for a hero, only his friend might be out of some despair, he gets into death. But on his command, many are ready to die. Now tell me, who is a better player? Obviously the villain. And you see, always the villain has more money. And obviously surrounded by many people. What is the role here? Can you see? He is playing his role in a very typical, in a best manner. And that's what I say, in corporate, if you really want to climb the ladders, you should follow them. You should be a team player. You should know how to motivate people. Can't you see? A hero, after somebody dies, he becomes a hero. But for him, he is already a villain. Already he has a following. But what do I say? It's not about being like that. See, Ravan was a demon, but yet he was also called as Ravaneshwar, means he also has the quality of gods. Even gods could not reach out to Shiva, and he used to. So every bad thing that we see, it is a perspective of view of looking at that. But as I said, grace always reigns. Now just tell me one more scientific way of understanding this. We all know something called as gravity, right? Let's say a good person and a bad person, both are standing on the 7th floor and both jump. Will gravity say, no, the bad person has to be pulled down and the good person will be floating in the air? No, it doesn't work in that way. That's why the mechanism of this creation has been done in certain way that both are seen as equal while you are acting, not in the real life. However, the choice is obviously yours. And with that choice, the kind of actions that you do, you get the similar kind of reactions for that. You have done something good comes back, that you call as good karma. You have done something bad comes out, and you say that's a bad karma. But all the things, both are equally equipped. What is intelligence and what is ignorance here then? Intelligence is when both have been given the same kind of opportunities and boons,
The one who utilizes it for his own development or the development of the creation is a good fellow. And who is using that in a destructive manner is a bad fellow, because he doesn't have that idea itself. Now, who is good and bad in this? There is no good and bad. It's all about intelligence and ignorance. And for that, you see, the good person who looks to be suffering in this life might be because of his good things, he might not come back again. But because of his bad deed, it might come again and again and again. Now just think of what is good and bad and why grace should not be there. Grace, it is not that. Has it ever happened that Shiva Guruji, you were standing and it was not raining for you and the person side by your side was getting drenched in the rain? It doesn't matter. It is not related to age, not related to gender, not related to caste, color, creed, whatever we say, because in its creation, all are equal. Only we get our results based on what we have done. And how do we know? The person who is an atheist this time, he has done something because of which he is in this way this time. And who knows? It's all, but only you will realize when you wake up. The drama is over. The curtains fall down. And then when you wake up and you say, wow. And you see, in our earlier days, you remember we used to see like stage dramas. I don't know, like these are not happening anymore. Nor else in every village, like every summer, there would be a gathering and people will go through that. And have you seen, like at the end of the show, both the villain, hero, actors all come together. The one person whom you have like felt very bad throughout the drama, but at the end when he comes, you applaud for them. Why? Because you know that he was playing a role and what a role he played, and you applaud for the role that he played. And we should applaud for the role of the other people, those who are playing in that way, rather than thinking, why is he doing like that? I say, wow, what a play you are playing. Can you see, in this moment of realization of your own acceptance, you are free from unnecessary tension of your mind. How many of us just think in that way that, oh, why he's like that, why he's like that, and we are spending our energies. It doesn't matter why he's like that. He might be playing that role. What are you doing? Are you playing your role well? And if you're playing the role of a hero, play like a hero. And obviously there are side actors. And how do you know? Some side actors are already always there with you. So let them play their role. But payment has to come and depends on what role you play. What is role? Karma. Is it not? So that's how, as simple as that. Why should not grace happen? I don't question that. I say, what are you doing with that grace is more important. We all have ideas. We all have knowledge. Yeah, why not, Deepika ji? They are playing their roles. You are playing a role. You see, we might be thinking ourselves to be the heroes, but just let's ask some of our people around us. For them, we might be the villain. For many of you, I am the villain. You could have slept in the morning till 7, but I have more like made you to wake up at 5, 3, 4. I might be a villain for someone. Why not? And if not for you, might be for your family members. He said, these people have gone mad. For you might be a hero, but for them. So can you say, like, I should not get the grace? You cannot say, because it is the perspective, the way of looking at it. And the way we look at it is all that. But rather than that, if you have understood your role, play it well. That's what it is said. And let the drama go on. But you say, this is my last and I retire after this. I'll not come to play anymore. Decide. So I hope I answered your question. Thank you, Guruji. I just completed your encounters with the Supreme now only, about 2 days back. And I got so much of clarifications on that. Mm-hmm. Yet this questions was there that I wanted to get it from you. Sure. You You should come up with these questions, because you see,
These questions are not the things of the people, those who are walking on the path of spirituality, but these are the questions from the people, those who are not. And they mock at us, saying that, what are you doing? Do you understand anything? Then if God is there, why so much of bad is happening? Then tell them these stories. And then they will realize, what would you have done if you only had the east? Where would the sun go? So you need a west. And the sun distributes itself equally. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you. అందరికీ. So next, please. So we have Jayaraji. Jayaraji. Jayaraji, please unmute yourself. Yes. So check that, Jayaraji, now. No, I'm not getting your voice. Can you try again, please? Pranam, Guruji. Yeah, Pranam. Okay. Guruji, enlightenment is freedom from disturbing thoughts, feelings, tensions, and living with love joyfully to the whole world. We have got two ways of attaining that. So Guru say there is one called Bhakti Yoga. There the bhava is important. That Okay. surrender is important. Mm-hmm. So when I surrender this mind or whatever this mind thinks, etc., to the God and the Guru, there is a joy and peace. Okay. But still, I am unable to do what the Guru says. Okay. For example, Guru says, get up at 4 o'clock and do these things. I'm a villain then. When I sleep at 1 o'clock, 2 o'clock, I'm unable to get up, and then I think, health is important, then the body is going down, what to do? So get up little late. And even you said to me, go to orphanages, etc. But every Sunday I am busy with some course or something like that. Even that is also not possible. So this is Bhakti Yoga. Okay. Coming to the second one, this is a Jnana Yoga. You say Aham Brahmasmi. Okay. That means you are the God. Therefore you create. And actually nothing to do. You are already God. Therefore whatever you say will happen. Here also I have seen that I have failed. Like you said that about 6 months back, when we do 555 method, in order to get some money, I wrote for 1 lakh and then I wrote for 1 crore with the dates. And so far it has not happened. And you said, okay, wait, because when the order has been given to the existence, the day will come for you to prepare and bring it. So in both the ways, I feel that I am a failure. Very good. And now, and these two are even looking opposite to each other. Okay. That is this Bhakti Yoga, that is surrender, and we need not do anything. And the second is I am God, I am Brahmasmi, therefore I have to create. So both of them are looking like opposites. And in both the cases, I feel that I am a failure. Okay. So where I am standing, what is Very this going good. on? Thank you, Okay. Guruji. Thank you. So in one way, when you say you have surrendered, then whatever has been said, you should follow. You don't do Yes. that. Yes. Second thing, when he said you are the creator, and then you doubt about your creation, then also you fail. But it's not about failing or winning here, Jayaraji. Why do we need to keep a label on ourselves? What all we are doing here is removing all the labels. And as I said, Aham Brahmasmi is not only saying that I am God, I say, I know who I am. I realized that I can be that. I have the potential of becoming that, right? Now coming to a very live example of that. Okay, Jayaraji. Yes, Guruji.
Just recently, I got a chance to buy a small house here. Okay. Okay. And I was sharing that with Haribhai because he came also today there. Some time ago, I was sharing with him. So I think like it would answer some of your questions. I used to stay in that lane. Okay. So I used to walk through that because at that time I didn't even have a vehicle. So I walked through that place. And at that time, that house was being constructed. A very amazing locality. So while I was going through that, I remember now actually. That is near to Guruji, that is near to the place where you are living now, just now. Is it that nearby or somewhere else? It is near Somajiguda only. Okay. Okay. So I was going through that, right? And I used to walk every day and I used to see, wow, what a good building they're creating. And without my knowing, I always thought like, now one fine day when I was standing there, I remembered what I had thought 18 years ago. How much time ago? 18 years ago. 18 years ago, while I was standing in that house and looking towards the street, that moment flashed in front of me. And that moment was, do you remember? You are walking through this and you said, can I have a house in this building? And I was standing there. 18 years. Now just think of, I was just saying, can I have this? I kept a question. I did not say, I cannot have this. Was that built 18 years ago, Guruji? Yes. Okay. Now just think of this. At that moment, what did I say? Can I have this? I kept it open. I did not said, I cannot have this, because it would have been very apt considering what I was having in my pocket at that time. But it doesn't seem like that now. Are you closing the doors with what you are asking for, or you are opening the avenues with what you are asking? Doors are kept open only. But you have said that I am a loser. You closed it. I have failed. You closed it. Because there is not an open-end question here. And just think of, if 18 years, yeah, it's okay, good, no problem. Because I was not worried about the time. And what do you learn being in this place? Worry is something that will kill you before death. What are you worried about? However, you started with a very amazing thing that you said. You said, we feel good, we are happy. But what about all these things? Is your happiness not enough? Is that not enough? Why do we need all these things? Let's say you have 1 lakh, why? 1 crore of rupees in your account right now. Do you think you'll be very happy? No, money doesn't define that. It is not to be good, Jairaji. We have met people. You must have met people, right? Those who have more than enough. But when you see them and you look at yourself, at least you sit in the night in your comfort, you watch your movies, whatever you want. You sleep at the time when you want to sleep and you wake up at the time when you wake up. Do they have that luxury with them? I don't think so. Because I have seen they might have the costliest of the beds, but they are not able to sleep. And when they want to sleep in the morning, they have to run. This is the most tragic thing, Jairaji. The thing that we think we don't have and that will bring happiness is already always with somebody else, but it is still not happy. Can't we see that? But just look at this fellow or look at anyone in this group right now. We don't talk about what you have, what I have. No, what I am saying is all that, whatever it is there or not, how am I feeling within myself? And what did Jesus said, Jairaji?
The ones those who have will be given, and the ones those who don't will be taken away. ये कैसा न्याय है? जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा. It seems so tragic. No, it is not tragic. What he is saying, the one who is abundant within will be given, and the one who is poor within will be taken away. The one who is filled with gratitude will be given. The one who is not without gratitude will be taken away. The one who believes will be given. And who gets that place at the seat of the Father? Who would you define that, Jairaj-ji? And I think it's not about the lakh of rupees that came to you or not, because I know if you get a lakh of rupees, I don't know whether you will be happy or not, but if you are happy, you are already a person worth lakhs. Now think of which one is a better choice. I can sit and I can think I don't have. Now tell me all that you have. Don't tell me what you don't. Have you counted your blessings? No, we only remember what was not good in my life. But all my blessings, you see, since morning, have you lived a happy life today? Food was on your table. There was shelter. You had a good cloth to wear. But we never thanked that. But I am thinking, I kept a wish, that wish was not fulfilled. Can you see we are closing the doors there? Don't do that. And however, Jairaj-ji, you know how you can be rich? It's as simple as that. Let me tell you how to do it. I always talk about something called as a mansik way, means doing it in your mental ways within this, right? Very simple. Now tell me, what would you do if you have that money that you have written? That is for charity purposes. Amazing. Very good. In order to do charity, you need not have the money in your bank. Now, how to do that? Now tell me, when somebody gives money to a beggar, right? I have talked about this, but let me bring more clarity to that. अगर कोई किसी गरीब को पैसा देता है तो बदले में वो भिखारी आपको क्या देता है? What does the beggar give back? He gives something back, right? What does he give? Blessings. Blessings. Now see, the person who you are thinking as a beggar, he is able to bless you. And you think yourself to be rich and you are only able to give money. Now tell me who is rich? जो गरीब है वो दुआ दे सकता है, जो अमीर है वो पैसा दे सकता है. बताओ अमीर कौन? So here in this case, you have to do one thing, Jairaj-ji. Charity begins at Home. home. What does that means? Which is your home? Have you ever thought on that lines? People think charity begins at home means in this house. No, charity begins within myself. This is my abode. This is my house. So where should the charity begin? Should begin within me. How does that thing can happen within me? I just sit every single day praying for others. That's my charity. And I say this, Jairaj-ji, whatever money that you are thinking of, just sit there and say, this is the amount of money. Can you visualize this or not? Yes. That you are actually helping people through visualizations. Now you could question that how could visualization work? Then you go and check law of attraction. You sit there with your good intentions, you create good karmas, you give people, you are helping people. And moreover than Jairaj-ji, we only think that we can help people through money. No. There are many people, those who have a lot of money in their bank balances. The only thing that they need is someone, those who could just sit and listen. Have we seen the old people in this world? If we go to any of the old houses, right? This, what you call as old age homes. And if you just go and speak to them, can you see how brighten up they become? You know why? Because at least you are there to listen, because nobody is there to listen to them. Can you do more charity than that rather than making somebody feel good today? You might feed someone. They might forget.
Jaraji, when you got married, you might have given a dinner party to your friends. Yes. Do they remember what you cooked on that day? No. Let alone them, we don't remember. But the way your friend made you feel on that day, have you forgotten that? The feeling that you had when you were going to marry. Do you remember that feeling? Do you remember the taste of the food? No. Do you remember the food? No. But the way they you made you feel, you still remember it. Now tell me, what is good charity? I think if I can bring that happiness on somebody's face, that's the greatest thing I can do. And of course, sit down every single day morning, whenever you wake up. Sit down and think like there is loads and loads of money in front of you. Start distributing it into the universe and allow that universe to do your work and say, whatever I'm sending, it's now your work to make it reach to the people, those who need it. Aham Brahmasmi. Now see how magic unfolds. You will be amazed, Jairaji, when you go to a place and suddenly the things are arranged for people on their own. Can you see the both ways? It looks contradictory, but the results will be the same. Now, why I'm telling all these things? Today, when I was talking to Ushaji, people were there celebrating her birthday. Then I said, Ushaji was asking, what is the way? I said, there are 4 ways described by Krishna himself. What is that? He said, Bhakti, Shakti, Yukti, Mukti. Krishna has used all the 4. Bhakti, we know, devotion. Shakti, power, or the intelligence through what you said as Gyan Marg, or knowing something or bringing something into your power. Bhakti, Shakti, Yukti. By some or other way, I will find a way. That is Yukti. And Mukti. If you do all these 3 roles well, Bhakti, Shakti, and Yukti, you will find your way. Yukti means anyhow I will find a way. Whatever works. But first of all, you should have that Bhakti. Where? Not only in somebody whom is sitting as a guru in front of you. No. First have that Bhakti within yourself for your own self. But can you see, we don't appreciate. You said that word twice. I feel so bad when somebody tells me that, Jairaji. I said, you say yourself to be the God and you say, oh my God, I'm not good enough. No, then you have not accepted yourself. And if you have not accepted yourself, how can you accept anybody else in this world? The first surrender happens within. Pehli bhakti apne saath honi chahiye. You should be so lovable to your own self that the mirror should shy when it sees you. But now the mirror is frightened because we feel so ugly within. No, the beauty should first appear within yourself. The God that we seek should appear within yourself. And as I said yesterday, Jairaji, why do we pull down our head down? Because whenever we are looking out there, it says it's not there, it's all within you. Now look at yourself. First have that kind of happiness within yourself, Jairaji. And then whatever comes, I am going to do my best. One thing that you can do, Jairaji, just sit by somebody's side and listen to what they have to say. Just make sure every single day you smile. How can you smile every single day? The rule is very simple. Make a rule that every single day I will make someone smile. And while doing that, you will also smile. Can you see? You are creating not only a beautiful within, you are also creating a happier world outside.
And by default, you cannot give something to somebody what you don't have. If you are not happy within, how can you give that to outside? If you don't have the grace within, how can you give the grace to other people? When you are not happy within, how can you give that happiness within? When you are not abundant within, how can you bring that abundance outside? So Jayaraji, it's all you. And that's why I said, if all that I have to do is all within me, then what is wrong in saying Aham Brahmasmi? So go every single morning, wake up the richest man in this world alive, and then sit and do charity. You see how good you will feel. Just think of, you are sitting, loads of money are there, and you are just distributing with both hands and say, okay, people are coming and taking it from you. How do you feel? No, what we do? Every single morning I wake up, oh my God, nothing is there, nothing is there. And I shy down within myself. I go into that shallow pit. Which one is good? देखो, अभी कुछ नहीं है, दुखी हो. अगर सोच के सुखी हो सकते हो तो होने में क्या मनाही है? What is wrong in that? It's all that matters is how happy we are, right? Why do we all do all that thing? Why do we want to do the charity? I don't know whether I will go to the Swarga or Nark. It doesn't matter. All that I know is when I'm doing charity, I feel happy. So why can't you feel happy while sitting at the place of your home only? And I think that should be a great sage. The one who is happy within, for me, he is enlightened or she is enlightened. I don't want a enlightened crying fellow. I want a human who is happy within, and that can bring the heads down of greatest of the great monks. And I say, are you happy within? And if you are happy within, I say you are enlightened. There is no definition beyond that. And that choosing is in your hands. Do you choose that? And Jayaraji, mano ya na mano, tum hi Ram ho. और जानो या ना जानो, तुम ही राम हो. सो मान के क्यों ना राम बन जाए? बोल बोल के इंसान बन गए, बोल बोल के भगवान क्यों नहीं बन सकते? So now you go, play. If you have to play like a pro. Why like a noob? I don't know. I have just heard this word noob from Iman. I asked him, what is a noob? No, the one though that is not pro at the game is a noob. I said, okay, thank you for giving me that word. I will use it somehow. So you have to play like God. Why only like human? What is wrong? Will God come and punish you that why are you saying you are God? Has that happened to any of you? Never happened with me. Rather, I see he is happy that somebody is saying, oh, I am, means he's saying that, okay, he agrees, that I am. And then the grace. So Jayaraji, what's your choice? Guruji, I have been telling that these two marks are looking like opposite to each other, because one is a surrender. That means we need not do anything. The existence will take care of us. And the other one is we have to only do it. So can you see, like, we are not there, we are not here, we are in the middle. Problem यही है, जो बीच में है वही ताली बजाता है. Means some people will get it, some people will not, some people will realize it after a late time. I said it is only the people in the middle, those who clap. I'll tell you some other day. now clap means what, Guruji? There are many kinds of claps, right? Okay. जो इधर के नहीं हुए, जो उधर के नहीं हुए, जो बीच में रह गए, वही तो ताली बजाते हैं ना आके. Achha, for everything they will simply clap their hands, you mean? They will cry, they will crib. Guruji, here you are following both the methods, no? For
I Forest follow all groomed. the methods because for me all the way leads to the same place. मैंने क्या कहा? युक्ति. What is yukti? Whether for me, whether it works as the bhakti marg or the gyan marg, I am walking on both the paths. Can't we see we are doing the meditation and at the same time asking question and answers? What is that? It's the both way. We don't want you to fail in any way. Whichever path works for you. We are going on both the paths. And why should only one? I say, let's trade all the paths and let's see what happens. If these many lives have gone and I have still survived myself to this place, let me try one more time. What's wrong in that? Because time passes, I don't. The world comes and disappears, I don't. And what if I don't awake this time? I'll awake next time, because awakening has to happen. I am certain of that. That's why I don't move. That is the bhakti path, that my awakening is certain. That's your bhakti. Let him awake whenever he wants to awake me. I don't care about that anymore. Okay. Right? So, And then this one, manam aham brahmasmi jnana marg. Gyan marg, you see, what are we doing right now? You're asking the question, I'm giving you the answer. So seeking. Why not? No, this is creating whatever we want. No? When I am that, I can create. So create, na? Who says you cannot? That's what I said now, Guruji. When I tried, it's not happening, and therefore. Now you are watching to the outside world and saying not happening. Has it happened within? Make it happen within, and you will see it manifesting outside. But Can somehow you see this but? Can you drop that? And no, talk? I want to say that even that money way, I'm seeing that in the present time, it's actually growing only. Oh. Not that way, which I wrote in that paper, but it is growing. That also I'm seeing. So one fine day you wake up and somebody has thrown a big bag in your door, and you open it and you just search, so you're like, oh my God, how much money is there? Guruji, I'm not bothered about money, Guruji. 2 rotis are enough for me. I have not gone Then behind I can anything. say, if you are happy with 2 rotis and you don't have any desire, you are already attaining mukti. That's it. And if you are happy within, as I said, if nothing bothers you, you are enlightened. So now choose whatever you want to choose. So Jayaraji, ponder upon what I said. Okay, Guruji. Okay. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you, Jayaraji. Thank you so much. Thank you, Jayaraji. Pankaj ji, yes. Pankaj ji, please unmute yourself. नमस्कार मानस जी। नमस्कार शर्मा जी। मानस जी कैसे हो? देख लो आपके सामने है, अगर चमक थोड़ी कम है तो बोलो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं और क्या। हाँ, ब्राइटनेस तो बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ता ही है, तो ब्राइटनेस से ही सबको जो सो रोशनी मिल रही है मानस जी। मानस जी, थोड़ा जो सो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ओके, थोड़ा समय लगेगा तो अगर थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा कुछ। अच्छा, तो ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों से थोड़ा वैराग्य भाव था मन के अंदर कि भाई ये दिन अपन ऐसा दिन बीतते जा रहे हैं, और वैराग्य भाव थोड़ा जागृत हुआ। तो मैं बोला यार, दिन भर अपन काम करना, फिर बाद में कैलकुलेशन करना, फिर जो सो वो है रोज रोज जो सो अपने को है ये कब तक चलेगा बोल के थोड़ा वैराग्य भाव था। तो
इन बीच में जो सो फिर आपका अपना सत्संग का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें भी शायद कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक आदमी जो सो बेड पे मरणावस्था पे लेटा हुआ है और उसको गीता का जो सो पढ़ो बोलो तो वो पढ़ रहा नहीं, उसको कुछ गीता के बारे में जो सो जानकारी लियो या फिर उसको तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो चीज के अंदर। शायद अपने पास में से कोई क्वेश्चन किया था। हेलो मानस जी। हाँ जी। हाँ, तो आपने बोले थे कि भाई उनकी तैयारी वैसी थी बोल के। ठीक है। तो फिर मेरे को फिर और जो सो जागृति हुई कि भाई अब ये तैयारी ऐसी है, तो मैं भी अब मेरा पिछला जो सो समय देखा, अगर वो चीज के अंदर मेरे लास्ट अवस्था में बैठा हुआ हूँ और तो मैं सोचूंगा कि अब मेरा तो भरोसा नहीं कि भाई आज भी जा सकता हूँ कल भी जा सकता हूँ। ठीक है ना माने जी। ओके। तो मेरी पिछली तैयारी क्या है, तो मेरी पिछली तैयारी में मैं अब थोड़ा आंख बंद करके देखा हूँ, तो मैं वही कैलकुलेशंस, बच्चों पे कंट्रोलिंग, ये कर लेना वो कर लेना, ये सब जो सो चित्रगुप्त के सर का बढ़ रहा। तो मैं बोला कि अगर मैं यही मूवमेंट में अगर यही चीजों को जो सो लेके अगर मेरा जो सो अंत हुआ, तो फिर मेरे को फिर वही हिसाब से फिर मेरे को फिर वापस आना है। फिर अब इसका क्या रास्ता बोल के फिर मैं जो सो अपने मेरे इसमें हूँ था कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं बोल के। ओके। तो फिर मैं जो सो अब मैं एक बार थोड़ा छत पे गया था मनोज जी, संध्या का वक्त था, तो वही चिंतन में था। तो मैं सोचा कि चलो भाई अभी तो मैं अगर वैराग्य भाव में हूँ, मेरे को कुछ भी जो सो अभी अटैचमेंट भी नहीं है, मैं अभी मुक्ति चाहता हूँ, तो क्या जो सो आई कैन गेट डेथ। मैं अभी मेरे को मुक्त होने के लिए मेरे को क्या मौत मिल जाती, क्या नहीं मिलती। अब जब ये जो सो अपना तैयारी वैसी है और मैं अभी ये सेंड में अगर मैं सोचूंगा कि मेरे को मौत मिल जाना, लेकिन मौत नहीं मिलती, वही भाव में था। तो एक जो सो माया का जाल जो सो मतलब माया रास्ता, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, तो एक कुत्ता रहता ना मानस जी, कुत्ता ऊपर आता छत पे, एक ही तो माया जो सो घेर रही थी मेरे को। मैं मुक्ति की बात कर रहा था, अब मैं डंडा लेके जो सो उसको भगाने का कर रहा हूँ, तो अभी जो सो फिर माया पकड़ ली मेरे को एक ही सेकंड में। तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को जो सो मौत आना, अभी जो सो कुत्ता सामने आएगा तो मैं माया को हाथ में ले लिया। वेरी गुड। ऐसा तो चलते रहेगा जीवन भर, तो कैसा। तो फिर बाद में जो सो ये चीज सोचते सोचते फिर मैं क्या करा मानस भाई, एक सोफे पे बैठ गया। सोफे में बैठने के बाद में जो सो सामने कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की फोटो है, वही उनको देख लेके मेरे को ये क्वेश्चन में था कि क्या होगा, क्या रास्ता है भगवान दिए बोल के। अब वही उनका चेहरा देख लेके मेरे को है ना जो सो थोड़ा निद्रा के सर का आ गया। लेकिन जब मैं वापस आंख खुली ना मानस भाई, वो पूरा जो सो चेंज हो गया मेरे को। वो भगवान जो कृष्ण भगवान सामने दिख रहे हैं और जो मेरे को मुस्कुराते के पूछ रहे, मिल गया समाधान। मैं उनको देख के स्माइल करके बोल हाँ मिल गया। तो क्या वो जानना चाहते हैं वो जो सो क्या समाधान था सब जने? पक्का, क्यों नहीं जानना चाहेंगे। अब इतना सुंदर एक्सपीरियंस। जरूर जरूर पंकज जी जरूर जी। तो परसों हरि भाई का भी जो सो ऐसा सुन के जो सो मेरे को भी जो सो थोड़ा फीलिंग आई कि अरे देखो ये मौत तो कभी भी आ सकती, और ये जो सो अगर हम पिछला जन्म इतना मतलब जो भी साल हमने गुजारे हैं, इतना साल का जो सो इतना गुच्छा लेके अगर हम सडन अपना कुछ हो गया, तो फिर अगेन जो सो वी आर ब्लैंक, फिर वापस वही जन्म लेना है। तो इसका क्या रास्ता है? बल्कि मैं मेरा जो सो उनको देख लेके वो चेतना में चला गया। तो कृष्ण जी जो है मेरे को जो सो कॉन्शियसनेस में संदेश दिए मानस जी। वेरी गुड। चलो क्या बताया उन्होंने, बताओ जी। तो जो भी चीज मानस जी अपना सुनते हैं करते हैं, लेकिन जो भी चीज अपने को अंदर से आती ना वो पक्की रहती। ठीक है ना? हाँ जी। तो मेरे को क्या अंदर से जो सो आया, उनको स्माइल, उनका जो फेस देखने के बाद में बाल स्वरूप है और वो स्माइल कर रहा है।
अब आप जो भी सुन रहे हैं ना, उसमें अगर लॉजिक माइंड से सुनेंगे तो वो चीज आपको कुछ भी नहीं लगेगी, छोटी चीज है। लेकिन भक्ति से सुनेंगे वो चीज, जो 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 चीज कॉन्शियसनेस में, चेतना में जो सो कृष्ण जी ने बताया है, वो अगर भक्ति से सुने तो ये जो सो अपने को ये मुक्त करने का जो सो रास्ता है मानस जी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में मैं जो सो जब जागृत हुआ, तो उन्होंने यही बोला था कि, उन्होंने यही बोला कृष्ण भगवान ने, कृष्णा अब मेरे को जो सो आपका जो सो जो चेतना में मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या था, मेरे को सेंटर में रख लिया था एक्चुअली, तो मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ इसको सबको, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूरा कंट्रोलिंग सेंटर मेरे को बैठा दे, कृष्णा को दे दे, ठीक है। तो अब मेरा जो भी है, मेरा बोझा, मेरा दर्द, या फिर मेरा अच्छा बुरा जो भी फलाना डिगड़ा जो भी है, सो मैं पूरा उनको सेंटर कर दिया। ओके, ठीक है। अब मेरे को कोई किसी को भी कंट्रोल करना नहीं है। ओके, मेरा जो सो बोझा खत्म हो गया, और मैं बहुत हल्का हो गया फील। एक स्टेप हुआ ये। ओके। सेकेंड स्टेप क्या है मानस जी, इसके अंदर एक उन्होंने टूल दिए। वो टूल अगर भक्ति से हम सुन लेंगे ना, वो टूल से हम ये जन्म और मृत्यु को पार कर लेंगे। चलो वो टूल भी दे दो। ठीक है। तो ये मैं अंदर से ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई जो सो कुछ बनावटी नहीं है मानस जी, ये जो सो अंदर का जो सो है कॉन्शियसनेस है, चेतना से। तो उन्होंने जो सो ये जो टूल दिया, उन्होंने ये कहा कि बस अब उनको ये कि जो सो कहना है कि जैसा कि रात में हम सोते हैं या फिर बीच में अगर अपने को कॉन्शियस में रहना है, थोड़े वर्ड्स बोल के करने को अपने को सोना है, या फिर चलते चलते भी बोल सकते, जब भी बोलना क्या है, कृष्णा मैं खुश हूं, मैं तृप्त हूं, और मैं मुक्त हूं। ठीक है। कृष्णा मैं खुश हूं, मैं तृप्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरे साथ में कोई बंधन न चले, इतना ध्यान रखना, चलो चलते हैं। मतलब आज मृत्यु आ रही मेरी, तो मैं ये बोलना डेली, आज बोला मैं, आज मेरी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जब सुबह सूरज उगा तो मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा मिला मेरे को, तो मैं उसको उत्सव बना रहा हूँ। उत्सव एक्स्ट्रा मिला मेरे को, मैं उसको हर चीज को उत्सव से लूंगा। ओके। फिर बोलूंगा कि कृष्णा मैं मुक्त हूं, मैं खुश हूं, मैं मुक्त हूं, मैं तृप्त हूं, चलो चलते हैं, और मेरे साथ में कोई बंधन न चले, इतना ध्यान रखना, चलो चलते हैं। आज बोला नहीं दिए, आज मुक्ति मतलब मौत नहीं दिए। 1 महीना बोला मौत नहीं दिए, 2 महीने बोला मौत नहीं दिए, 1 साल बोला मौत नहीं दिए, फिर बोलता गया नहीं दिए नहीं दिए नहीं दिए, बोलता एक दिन दे दिए। अब मैं मुक्त भी हूं, मैं रोज बोल रहा हूं कि जो सो ये चीज, और मेरे को अगर मैं वो टाइम पे चला भी गया, लेके भी चले गए, तो मेरे साथ में कोई बंधन नहीं, और साथ ही साथ मेरे को लेके गए तो मैं मुक्त भी हूँ, खुश भी हूँ, और तृप्त हूँ। आगे का आने का रास्ता नहीं। It's 9:30. ओके। तो बोलने का मतलब यही है कि हम पिछला तैयारी ये करें, कुछ बोले नहीं, खाली रेगुलर बेसिस पे माया के साथ में चलते रहे। ठीक है, माया के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये अगर वर्ड्स बोल देते हैं अपने को, कृष्णा को, या फिर अपन जो भी जिसको भी मानते हैं, तो हम कोई चीज में बंधन भी नहीं बनते, मुक्त भी है और खुश भी है। आज लेके गया नहीं लेके गया, बोला आज बोला नहीं लेके गया, आज कल बोला नहीं लेके गया, लेकिन एक दिन बोलते बोलते ये तैयारी भी हो गई ना मानसी। हाँ, तैयारी भी हो गई, एक दिन ले जाएगा, और मैं जो सो मेरे माइंड में भी है, सेटिंग बराबर है मेरी, और एक दिन ले जाएगा जब मैं खुशी खुशी चले जाऊंगा। करेक्ट। तो उसके बाद से मैं हर जो सो चीज को एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा, उसको उत्सव बना रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। तो ये आगे की पूरी तैयारी सेटअप कर लिया मानस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी जने को जो सो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी सुन रहा है
वो खाली इतना वर्ड्स बोल के जो सो अपने को जो सो करे कि मैं खुश हूँ, मैं तृप्त हूँ और मैं मुक्त हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ में कोई बंधन न चले, चलो चलते हैं, फिनिश। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, शब्द तो उसके ही थे। मैंने यही कहा था कि भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति, वही तो आपने बताया। हाँ आपकी बिल्कुल। भक्ति ऐसी रही कि उसके शक्ति से वो आया, हाँ और उसने आपको युक्ति बताई मुक्ति की। तो बताओ उसमें और मैं मुझ में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं। मैं भी वही बोल रहा हूँ, वो भी वही बोल रहा है। करेक्ट। तो आपकी युक्ति वही है कि आप ये बोलो, शक्ति ये थी कि वो आके बोला। हाँ क्यों बोला? क्योंकि आपकी भक्ति थी। तो जाओ जियो रोज। तो आपका घर और आप अपने अंदर वृंदावन बना दिए, अब तो रास होगा, सेलिब्रेशन एवरी डे। एवरी डे, एवरी मूड। उसके बाद तो क्या है मानस भाई, अमृत बरस रहा समझो। बस और बस क्या चाहिए? यही बस तो मुक्ति है। तो कहने का यही मतलब है कि मानस जी, हम लोगों को जैसे ऊपर से जो सब भी आता ना, वो चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब अंदर से जो उत्पन्न होता है वो चीज को पकड़ जो सो जल्दी कर लेते हैं हम लोग, और हमारी वो स्थायी रहता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। जी वो पहला बात याद है, my truth cannot be your truth until my experience becomes your experience, and the day my experience becomes your experience, there is no need of any further explanation. yes. क्योंकि उस दिन सवाल ही खत्म हो जाएंगे, जैसे सवाल ही खत्म। आपके सवाल खत्म हो गए। हाँ। क्या पाना है, क्या जो सो रखना है मैडम मानस भाई, सब मुक्त है। हर हर महादेव। ये देखो। किसका है, उसका ही है पूरा, मालिक का। Until उसको at the बना लेके वो at, टेंशन नहीं लेना, क्यों, मुक्त खुश आनंद हर दिन उत्सव। बस अब आप भी उसके साथ नाचो, एंजॉय, एंजॉय। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। यस। तो ऐसा ही खुश रहना मानस भाई, क्योंकि अंदर से जब जो जो फूल खिलता ना, तो वैसा ऑटोमेटिक अच्छा अच्छा, जब मैं बोलता था तो आप मुझे पूछते थे नहीं ये कर्म से कैसे छूटे हैं। आज आप बोले अंदर से जब बारिश होती है, जब हंसी छूटती है, जब आनंद मिलता है। हाँ भाई, मैंने तो वही कहा कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे और बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ढिंडोरा पीट के बताने लगोगी, अरे देखो देखो इतना सरल है, इतना सरल है, अगर समझ गए तो सब कुछ यही है। यही है, ये मुक्ति है। जाओ जियो। बिल्कुल मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हर हर महादेव। हर महादेव। उत्सव थैंक यू, उत्सव, थैंक यू, हर थैंक यू बार भाई उत्सव शेयरिंग। रहो और हर दिन जो सो आनंद में रहो। बस कोई है ही नहीं, कोई कोई अपना है नहीं, कोई अपना जो सो वो नहीं है, हर चीज अपनी है और अपनी नहीं है, खत्म, मुक्ति। बस असंगो निर्विकल्पो निराकार रूप। बस आप आने के, आप जो आए थे ना मानस जी, उसका भी थोड़ा वाइब्रेशन रहता है। बिल्कुल मानस जी प्रणाम। प्रणाम। आप आए जब से आनंद ही आनंद है हमारे घर में। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ अपना नाम बदल दूं। चलो धन्यवाद है बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। बस ऐसे ही सुख शांति से रहें। और हमको तो लगता है कि पंकज जी के सर के ऊपर का बल्ब जल गया है। बिल्कुल। मतलब जल गया मतलब जला हुआ है, जल गया मतलब खराब नहीं हुआ। So we are so happy. So कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है मानस जी। देखो कैसा है ना, अपन लोगों को अपन लोग ही कॉम्प्लिकेशन है दिमाग में डाल के जो सो कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं कुछ। हम अगर भक्ति में चले जाते हैं तो वो भी कृष्ण भगवान की भक्ति या अपने अपने जो भी भक्ति है सो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हमारे दिमाग में ही है मानस जी, कोई इधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी क्या, तो जैसा फूल ऑटोमेटिक खिल रहा और हर जगह जो सो आकाश आ रहा, वैसा ही हर बार उत्सव ही है, हम लोग नहीं ले रहे बस। तो शिव जी यही बोल बोल के अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। खुद को अनुभव हो तो वो अंकुरित अलग हो जाता है। जाओ जियो बस। अब हम कह सकते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सुंदर चीज बताने के लिए। शायद आपके इस बात से कोई और जाग जाए। जी, आज क्या हुआ बोले तो हमारे हमारे मदर का डे था महाराज जी। थोड़े मेहमान आए थे, उनको भी मैं ये जो सो मेरा जो सो शेयर करा महाराज जी। उनके पास का सामने का जो इतना साल का जो कचरा था ना, वो इतना गिर गया और इतना खुश होके गए उन लोग, भाई उनको मुक्ति मिल गया सर का। उत्सव उत्सव बोल के गए और हर दिन अब उत्सव करेंगे। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। हम उन जीव लोगों को उत्सव ही छोड़ना भूल जा रहे, खुद को, खुद के दर्पण को देख के भी उन्होंने डरावना चेहरा दिख रहे खुद का, भूल जा रहे कि खुद का क्या है उन्होंने। आप जो सो बोल रहे हैं इतने सालों से, आप मतलब लोगों को चेतना में डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपका भी बहुत धन्यवाद मानस जी। इतने चोट पड़े, किसी दिन दीवार तो गिरना ही है। चोट जब तक बाहर से पड़ती रहेगी समझ में नहीं आएगा, जिस दिन अंदर की एक चोट पड़ी दीवार अपने आप ढह जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। तो बस मैं आपके जरिए से सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो सो आपका हर एक दिन है ना, आप अगर जो सो कोई शक्ति को मानते हैं, उनको जो सो मान के हर एक पल वो उत्सव बना लीजिए। कितने दिन की जिंदगी है, कितने लोगों से मनमुटाव करेंगे, क्या क्या पाएंगे, क्या क्या खोएंगे, हर दिन को उत्सव बनाओ, बस खत्म जियो। अब धवल जी पूछ रहे हैं कि अंदर की चोट क्या है। अंदर की चोट ये है जो बता रहे हैं, जिसे आप बता नहीं सकते क्या हुआ। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई, आंख खुली और सब कुछ बदल गया। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। घर वही का वही है, बच्चे वही के वही है, शरीर वही का वही है, लेकिन सब कुछ बदल गया आंख खुलते ही। अब देखो, वो भाग भाग के लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई समझ लो, सुन लो, जान लो। अब पता चलेगा आपको। क्योंकि उन लोग अभी जो आए ना मानस जी, उन लोगों को ये चीज के बारे में पता नहीं चल रहा। उन लोग ऐसी जिंदगी जी रहे, मैं बोला ऐसा जिंदगी अब तक जी लिए। अब कम से कम जितना भी समय बचा हुआ है उसको तुम यूटिलाइज कर लो और मुक्त हो जाओ। जब उनको जब खुशी, हर एक मनुष्य एक्चुअली क्या है, खुश राशि है, मतलब उसको खुशी ही हमेशा होना है। लेकिन उन खुद अपने को ढक ले रहा, जान रहा नहीं क्या है ये माया के जाल के अंदर तेरा मेरा मतलब काम करना ही है, ये काम करना ही है। वो बोझे से दुखी हो जा रहा मानस भाई, हर इंसान दुखी है। हालांकि दुखी ने का जब भक्ति में गए ना, तो ये दुखी का कोई शब्द ही नहीं है, उत्सव का ही शब्द है। Now everybody is able to feel जो आप बोल रहे हो ना, अब सब लोग यही देख रहे हैं, yes, this is what should happen. अमृत बरस रहा, उसको अपने छतरी लगा के या फिर उसको बंद मत करो, बस आनंद लो। हरि भाई सुन रहे हैं क्या? हरि भाई सुन रहे हो? उनको डाउट है आप जागे नहीं, इसलिए आपको जगाने के लिए पूछ रहे। सुन रहे हो? शहनाज भी चली गई हरि भाई। सुन रहा हूँ भाभी जी। शहनाज भी चली गई होगी। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, कई सारे लोगों को पता नहीं है कि शहनाज कौन है। हरि भाई को मेरे को मालूम है। तो हरि भाई बता देंगे कि शहनाज कौन है, और आप सब भी एक अच्छा हंसी सुख, मतलब यू विल बी आई डोंट वांट टू से इट नाउ। चलो, आप कुछ लोगों को हजम नहीं होगा। शहनाज उनके स्कूल में एक लड़की का नाम था, वो इनके सीनियर थी, लेकिन उस दिन स्कूल के बारे में बात करते करते उन्होंने उसके बारे में बात की। तो वो उसकी क्या खासियत रही होगी कि इनको अभी तक याद है, उस चीज को लेके बहुत बात हुई थी उस दिन। सो दैट्स द बैकग्राउंड स्टोरी। एक्चुअली वो हरि भाई भी हमारे साथ में स्कूल के ही है, तो उनको भी पता है वो बात। अच्छा, चलो भाई, मेरी क्लासमेट थी मानस जी, मेरी क्लासमेट थी। ओके, बस अमृत बरसा हमारा अपने हरि भाई। धन्य हो। धन्यवाद धन्यवाद पंकज जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। काफी लोगों को कुछ ना कुछ मिला हो आज। बस अभी एक क्षण के अंदर से छोड़ दो सबके चिंताएं, उसको सामने वाले को कंट्रोल कर दो। तुम कहीं क्यों लेते? मेरा कहना है कि सामने वाले को जब जो सो चाबी पकड़ा दिए, तो कई की चोरी का डर, कई का जो सो आमदनी का वो, उसको पकड़ा दो, खुश रहो, खत्म। तू तेरा जान, मैं मेरा जान, बस आनंद दो। होता है मानस भाई भी बोलते हैं, मेरे को चोला भी नहीं चाहिए, बस्ता भी नहीं चाहिए, बस्ता भी तू ही रख ले। वही है ना पंकज जी,
क्यों दबाए बैठे हो मुट्ठी में सिक्के जनाब, मुट्ठी खोल दो, तब ना रहेगा उनके छूटने का, ना चोरी होने का डर। यस, छोड़ दो। यही मुक्ति है फिर। थैंक यू सो मच थैंक पंकज यू। जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल शेयरिंग। और रास चलने दो। बस मेरा यही है कि जो सो रिपीटेडली हम लोग वांटेडली अगर ये वर्ड्स बोलते हैं ना, तो हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जो सो एक चित्रगुप्त के सर का, आप बोले सर का, वो होते रहता है। हम वांटेडली बोलो, लेकिन हम लोग एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि ये वांटेडली बोलते बोलते सर राम 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 जपते रहते ना, उससे अच्छा ये बोलो कि मैं खुश हूँ। एक बार खुश होना तो मैं आऊंगा नहीं, मैं तृप्त हूँ। एक बार मैं जीवन से तृप्त हो गया तो मैं दूसरा जन्म क्यों लूंगा, मैं मुक्त हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ में कोई बंधन न चले, भगवान इतना ध्यान रखना। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, बस कदम खुश। चलो। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू। वी आर सो हैप्पी फॉर यू एंड फॉर योर एंटायर फैमिली। ऑल इज अवर फैमिली मानस भाई। ये तो कुछ लंबी ही हो गई है फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी। रेवती जी, Pranam Guruji. प्रणाम रेवती जी। I first have a complaint and then I'll ask my question. I know that you will lose your question anyways. No, no. I have a big complaint. All of you are all Hyderabad, you're visiting everybody's house. What are we to do in Mumbai? It's a big complaint. You have to come to Mumbai. Just reach out to Haribhai, book a ticket, we'll be there. That's how it is. Yes, I'll really do that. You don't challenge me on that. I'll really do it. I'll simply book a ticket and I'll send it and I'll board the flight. So, yeah. मुझे एक बात कहनी है. I just want to say one thing, रेवती जी. आप हमें इतना दूर क्यों रखते हो कि हमको आपके पास आना पड़े? नहीं, all that is okay, but you are visiting everybody's house, no? वो सब सुनने की बातें हैं. I just want you to come to my house. Simple. I don't want all this logic now. Okay, ठीक है. चलो सबके घर जा रहे हैं तो आपके घर भी जाएंगे. You have to come. Okay, so my question, and Guruji, I visited Baglamukhi again today. Very good. What was she doing? Yeah. Was she happy? Yeah, very happy because I went on time, no? So she didn't have to, I didn't have to trouble her. Okay. So my question is that you said yesterday when we were for this puja, for these 9 days puja, that it has to be done secretly, right? Yes. Now, problem is that of course we don't have too many people in the house, but when I'm doing my puja in the evening, my puja room is in my drawing room. Okay. So it's okay? I mean, there are, when somebody is on the other side, you see, yes. So let me tell you. Secret means it's not hiding, maintaining secrecy. Okay. I not go out and tell, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this. That's a difference between secret and secrecy. Okay. So it is, you have to maintain the secrecy, not as a secret. Okay. Clear hai? That's what I was, yeah, very clear. Because I got my new Devi Mata ki Murti also today. I did the Sthapana also today. She's beautiful, isn't it? Very beautiful. वो आपको because छोड़ती नहीं है. एक गई दूसरी आ गई. Yeah, because you also said that I had too big a murti in the house, very big. Yes. So I donated it to a temple and they're doing the puja very well over there. So amazing. That's why I got a very small one in my house. And second is, when you do this cleansing, chakra cleansing, I've been doing I used to do a lot, but there was a huge gap. I started doing something again last 2-3 days. A lot of emotions come out, is it? Or is there something wrong with me? No, surely, why not? और क्या होता है? समुद्र मंथन जानते हो ना?
हाँ. जब मंथन होता है तो पहले जहर ही निकलेगा. Yeah, I must have wept the whole night because I was listening to that 1 hour thing before sleeping, and I actually got a little worried afterwards. I said, I don't know whether it's just overcoming what, I don't know. It's normal. It's normal, right? Let it go. If you let the poison go, then only the elixir of life will appear. Yeah. And allow Shiva to drink it. Leave it there. That's all. Right? Thank you. Thank you. So, Deepika ji. Yes. So, Deepika ji, can you please unmute? Pranam Mahadev. Pranam. So, you are in God mode? No, Mahadev, because I want to see the God. I don't want to turn on my video. Okay. If I do that, you will highlight me. I want to actually see you and talk. So. Okay, so we'll not highlight you. I should not feel like talking to God, right? Yeah. Oh, Mahadev. Actually, the thing is, first of all, I forgot the question. This is so unfair. I forgot what my question was. Please keep your questions in written form. Everyone, a request. I am not responsible if you lose your questions. You do such a magic. What to do? Acha. You lose something, that is also my magic. Pranit, kidhar gaya? It's all yours. I don't know. I told you many times. It's all yours. So, I don't know. So, Mahadev, are you creating a question actually, now? No. No. There is one thing that actually I had a doubt, but I don't know if it is silly or I don't know what it is. So I never asked. See. But usually, yeah, Mahadev. So doubts are always silly, but it is good to not stay there. Okay. So ask. Usually maybe because it is in South India, I don't know what it is, but most of the movies, whatever we watched from childhood, it was like Lord Shiva will go and give all the boons, and then Vishnu will go and correct it and all that. But here, why is it happening in reverse? Why is it that Haribhai always requests you to do much more for us? Like, what is it? What is that twist that's happening? So why should Vishnu Which have was all not the fun? there before? And I have one more question. Like, it was always depicted how Lord Vishnu's love is in form of Krishna, Rama, every avatar that he has taken. Why is it that Shiva's love has never been told so profoundly, like about Vishnu avatars? Why is it so? Amazing. Because his love is so huge that it cannot be told. Words fall short. That's why it was never told. Have you seen like even in the case of any of the avatar, like Parvati was coming in different forms, but Shiva has always been waiting for her. Tell me, what kind of love that could have been? For ages together, carrying the same pain that she was going through. Can you tell me one thing? Love is not something to grab. Love is something that you feel within the pain of the other. But here people love to get something. He loved to make her realize who she is. Now tell me, which could be a better love? That's what, Mahadev, like, how would we know? Because only if we get a chance to meet. He doesn't or want, listen. Can you see, he will not even come and tell his sorrows to you. He will just wait patiently. He will be there to guide you in some or other form. But he said, I will not pull you.
I will allow you to wake up. I will allow you to realize. I will allow you, but I will wait. Can you tell me a bigger love than that? He gives complete freedom. He says, all yours. I am here. I will be waiting. You will never find me anywhere else. You will come back and you will still find me sitting here. पर अभी तो आप आए. क्या पता? शिव के अवतार के बारे में जानते हो? No, that's why I'm asking. I don't know. There are, every time he became Chandrasekhar. Why did he become Chandrasekhar then? Because her Parvati wanted that. Not because he wanted to look good. Hmm. Can you see? It is Okay. always because of somebody else. Because of them, he wants. इसे भोलेनाथ क्यों कहते हैं जानते हो? He doesn't know. Do you know how he went to ask for the hand of Parvati when he was about to get married? You know that? You told us once. Yeah, he didn't knew. He went to Narayan. He said, you have done lot many leelas. I don't know how to go and ask a hand of a girl from his father. See, the god of the gods, he said, I don't know how to ask the hand of the girl. And now Vishnu gave him some ideas. Okay, do this. But you know how he is. He's a playful fellow. वो लीला करते हैं हमेशा. And that's how you see it's that belief, faith. And you see what kind of love those two people might be having with each other. That Shiva goes and asks Vishnu. Vishnu gives him an idea and he goes there. पता नहीं, शायद विष्णु ने कुछ बोल के भेजा होगा. और विष्णु खुद भी चले आए. हाँ तो देखो. So that's how it's so amazing here. See, we cannot understand certain things. वो इतना विराट है कि ये क्षुद्र मस्तिष्क में नहीं समा पाएगा वो. You will always wonder, wow, what happened? Why is like that? You will be wondering. Just look at, can you imagine Shiva coming and standing in front of you and you looking at it and he said, you'll be wondered, ये कौन सा वस्त्र पहन के आया है? What is he wearing? It's itself is wonder. विष्णु को देख के तो लगेगा कि हाँ सभ्य है, अच्छा मुकुट माला सब पहन के आए हैं. But look at Shiva once. You'll be wondered. He says that's the thing of wonder. Why do we get so much mesmerized looking at Shiva? And That's why is it like? Because that is what you are. ये हजम करने के लिए थोड़ा मुश्किल है. मैंने इसीलिए कहा ना कि हजम नहीं होगा वो. That's what I'm saying. So the more and more you see, you just look at him and you just fall in love with him. You don't know. You just go deeper and deeper into that. कृष्ण मन चुरा लेता है, शिव आपको चुराता है. समझ में आया? Yeah. When because you look when at we think Krishna, of Rama or Krishna, we have a story to tell. You look at them, they are beautiful, Shiva, right? They are so beautiful by their smile. You say, just my heart melted away by looking at Krishna's photo. But Shiva, I melted. Yeah. That's the beauty. But whether you believe in this fellow or that fellow, both are again one. Both are same. Yeah. The only thing, today he appeared in this avatar, the next day he appeared in other avatar. It's all just to say you that I am going to come again and again for you. I'll be waiting for you. I just wish you all understand his love. I just wish you understand his patience. I just wish you stop doubting him. So it is. Thank you, Mahadev.
Thank you, Deepika ji. And you didn't say what is special about this Vishnu avatar, that he's always pushing Mahadev more to give more. बिकॉज देखो महादेव समाधि में चले जाते हैं, विष्णु आके उनको जगा देते हैं. कोई देवता आए जागे ना जागे, विष्णु आने से वो जाग ही जाता है. बोलता है अब क्या बताओ, see, this has to be done there, this has to be done there, this has to be done there, and they keep on doing. How lucky you people are. Thank you so much, Hari Anna. Thank you, Deepika ji. Thank you, Mahadev. Pranam. Ravi garu, please unmute yourself. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. एंड अभी से सभी अपने हम ब्रह्मास भी डिवाइन सोल्स के भी ब्लेसिंग्स चाहिए. कल मैं एक डीलरशिप ले रहा हूँ, ऑटो मशीन का डीलरशिप ले रहा हूँ गुरुजी. आपके अपने सभी हम ब्रह्मास के ग्रुप का आशीर्वाद चाहिए मुझे कल. देखा, चलो आशीर्वाद भेजो सब. Give blessings, give blessings, give blessings. Thank you. Thank you, Ravi Kumar ji. Thank you. The blessings and good wishes to your new business. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best, Ravi garu. Thank you, Hari garu. Thank you. Sandhya garu, please unmute yourself. Namaste, Guruji. Namaskar, Sandhya ji. Sir, what is love? Actual love? Is there any duplicate love? How can we behave while we are giving love or gaining love from others or divine? At that time, what is our behavior? What are thoughts and feelings? How? Till this, up to this, I do not feel like that. I am in that feeling. Okay. So very simple answer for that, Sandhya. Also, a small little question. Okay. How can we go to sleep? What happens at that time? Oh, so when you go to sleep, what happens? Okay. How can we go to sleep? What is that behavior? Okay. So at that time, everybody is going to sleep. How? What happens? Mechanism or something? I don't know. Okay. So first of all, I will start with what is real love and what is unreal or fake love, right? True love and what you say is a fake one. Very simple. At times, fake is not. I want to. What is? I have to be in that. I don't know what is this way or that way. What is the experience? I did feel like that. Okay. So in between the voice is getting cut, Haribhai. Is it for you also? Yes. Even I could not hear the question. So Sandhya Sandhya ji, garu, please ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? Question. Please tell me your questions. What is actual love? Is there any duplicate love? Okay. While giving love or gaining love from the others or divine, how will be our behavior, our feelings and thoughts? Okay. We can feel that is love or not love. This is not love or this is duty. This is what. Okay. So Sandhya ji, so let me speak to about this, that. I can't feel like that. No, again it get cut. एक एक करके लेते हैं. संध्या जी.
So let me speak one by one then. Okay. 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 So what is true love and what is fake love? That's what you are asking. The first question. Very simple. Whenever you love to get something is a fake one. When you love to give, that's a true one. Jahan, there would be a situation where you just feel like to give away everything. That's love. And there is something, you see, you saw a rose. I did not feel. I'll get you. You see, that's what, why you have not felt is something that you should look into. If you look at a flower, a beautiful rose flower, then you say, oh, I should have this flower. You cut it down and take it with yourself. That's a fake one. And the true one is you saw that, you appreciated how beautiful it is. You sat down there to appreciate that. That's true love. You don't want something in return. You just want to give away everything of yours. Have you seen a mother? वो हो सकता है प्रेम जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है. Anything. But if I am doing something, मेरे बच्चे से ये मुझे मिलेगा. Does a mother think that my son or daughter will grow up and then they will give me this and that? That's why I will love them and take care? No, it doesn't happen that way. Then that would be a business, not a love of a mother and a child. So for me, the easiest way of making you understand is a mother. It is unconditional as... Sir, at the small age, we did not expect. At a small age? We are doing that work, but after that, after they grown, we are getting something from them. Okay. Security, something. Any in other manner, bringing, going out, all these come under expectation. At that time we did. Now they have to do the business game. I think, Sandhya ji, you should connect with Shivji once. I think he can deal with it in a much, much better way. So Shivji, can you help her with once by listening to what she has to say? I believe like it's your domain. Because what you did in the last 2 sessions, we could see by the write-up of Aditi ji. So, yes. So Shivji, if you can even talk to her by just some other time also, it is fine with us. If you can just give her some time. Sure, Manuji. Thank you so much for this opportunity. Actually, Sandhya ji was also, I think, in the program. Okay, so she needs some more clarity then. I don't know on the second session whether she was there. I think Sandhya ji was working about the health issues she was saying during the program, and then I did suggest her to create her health chart, relationship with the health right from the childhood, and then work out on that relationship. So later, I don't know, Sandhya ji has worked on that. I think Shivji, you might have to take some more time for her. How you people work out on that, please. But I think you can help. Okay, Sandhya ji, why don't we connect on the WhatsApp? I'll just share your number, or I think I'll get it from the WhatsApp group. So I'll give you a message. Okay, we'll connect. And thank you, Manoj ji. While I'm here, actually, the sessions were done for the Hindi speaking sessions. About the English speaking ones, I was thinking, since we are keeping on Saturday evening, Sunday morning, the great program of yours is getting disturbed. Yes. Which is a long, everybody look for beautiful Sunday morning to connect with you.
So I was thinking Saturday morning India time, or some other time, it would be Friday evening for me. If we can work out something like that, then 2 weekends I can. Sure, we will. We can do that. We can plan that Yeah. out. Yeah. So I'll message in the group. Sure. Sure, Suji. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you so much. So please help her out. Thank you so much. Sudha ji, please unmute us. सुधा जी, नमस्कार सुधा जी। नमस्कार सर, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अभी जैसे ये बात हो रही थी, आप एक बार इससे पहले भी बात हुई थी, आपने तब कहा था ना, ये प्यार पेनफुल होता है कि नहीं होता है, उस पर कुछ डिस्कशन हो रहा था। अच्छा, ओके। तो मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कैसे कहते हैं कि पेनफुल नहीं होता है प्यार। हमें देखो, हम कहते हैं कि पेनफुल नहीं है। हाँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि हमें वापस कुछ नहीं चाहिए, इसलिए पेनफुल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मीरा को कुछ वापस चाहिए था, इसलिए उसके लिए पेनफुल था? पेनफुल नहीं था, उसको लगता था कि मैं इतना अलग कैसे हो गई उससे, इसीलिए पेन था। गोपियों को कुछ चाहिए था जो पेनफुल था। वो तो चाहते थे कि मैं और इनकी सेवा करूं, उनकी सेवा और नहीं कर पाई, इसलिए पेनफुल था। वो चाहते थे कि अभी भी हम तो माखन बनाते हैं, लेकिन कान्हा है किधर, खाने ही नहीं आ रहा, इसलिए पेन था। क्योंकि दही बनाना तो बंद नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना। एक्सपेक्टेशन क्यों होनी चाहिए पहले बताओ। अब जैसे मान लीजिए यशोदा थी, कृष्ण चले गए थे, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा बच्चा आए, मैं उसको खिलाऊं या कुछ करूं, तो उनके लिए भी पेनफुल था। क्यों नहीं होगा, जहां पे भी आपकी आसक्ति लगी, वो आसक्ति बन गई, वो प्रेम नहीं रहा। कभी बिना आसक्ति के प्रेम हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, देखो हम किससे बंधे हुए बताओ, आप में से किसी से नहीं। लेकिन क्या आप क्या कह सकते कि हम प्रेम नहीं करते आपसे? नहीं कह सकते। फिर नहीं तो मीरा का, गोपियों का, राधा का वो प्रेम अलग था। एक माँ का अपने बच्चे से भी अलग तरह का प्रेम होता है, ठीक है सर। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन वाली बात हो रही है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो माँ की ये कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि वो हम उसको अपने हाथ से खिलाएं, या वो तब भी अगर अपना बच्चा जाता है तो उसको तकलीफ होती है, क्यों? हाँ, वो एक्सपेक्टेशन क्या है, वो डर है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब हाथों से खिलाता है वो तो प्रेम है, लेकिन मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, वो डर है कि वापस नहीं आएगा, कुछ हो गया तो। कैन यू सी, अगेन यू गॉट अटैच्ड टू दैट किड। अटैचमेंट इज प्रॉब्लम, लव इज नेवर ए प्रॉब्लम। तो बताओ, प्रेम दुखदाई है क्या? मेरे लिए तो नहीं है। आई एक्सपेक्ट दैट अगर मैंने किससे प्रेम किया, वो मुझे पलट के प्रेम करे, दैट बिकेम एक्सपेक्टेशन। प्रेम कहाँ रहा वो? तो इसका मतलब सर ये कहना चाहते हैं आप, मीरा, गोपियां, राधा, इनका किसी का कोई प्रेम ही नहीं था? वो प्रेम को परिपक्व कर रही थी। देयर लव वाज गेटिंग इनटू फ्रूइशन। क्या आपको नहीं पता कि गोपियां कौन थी? पता है। फिर वो सब ऋषि मुनि थे जो आए थे गोपियों के रूप में। क्यों आए फिर वहां पे? वो तो अपना मुक्ति के लिए ही आए थे। डिड दे केम फॉर मुक्ति, या तो उनकी एक आसक्ति थी कि कृष्ण जब आए हम भी आके उनके साथ लीला करें? लीला करें, ये भी आसक्ति थी उनकी। तो थी ना। जब भी आसक्ति के साथ आओगे फंसोगे। तो ये आसक्ति उनके अपने हाथ में थी क्या? क्यों नहीं हो सकती? अब आप बताओ। जब हमारा गेम एक बात बताइए सुधा जी। हाँ जी। क्या ये आपके हाथ में है या नहीं है कि आप कान्हा जी को अपने हाथ से खिलाओ या ना खिलाओ? ये तो हमारे हाथ में है ना। तो फिर आने जाने में क्यों आपके हाथ में नहीं है? लेकिन कहते हैं वो हमारा तो निश्चित है, जो गेम हमें दिया गया है, हमें वही खेलना है। वो निश्चित किसके लिए है? जो
ये नहीं जानता कि वो स्वयं है क्या। जो जानता है उसके लिए क्या। कृष्ण को दुखी देखा है आपने? क्यों नहीं देखा? फिर सब उसके लिए दुखी हो गए, लेकिन ये कभी दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अरे पागल, भूल गए हो तुम क्यों आए थे। He was with everyone but not attached to anyone. वो कहते हैं कि ये समझो, रियलाइज व्हाट यू आर। और हम रोज रोज चिल्लाते हैं असंगो निर्विकल्पो निराकार रूपो, असंगो निर्विकल्पो निराकार रूपो। When either you can separate yourself and struggle to find it, or you never allow it to go away from you because you have become that. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप हमको इतना दूर क्यों रखते हो कि हमको आपके पास आना पड़े। तो दूरी तो बनाई है आपने। फिर जब दूरी ही नहीं है तो आएगा कौन, जाएगा कौन? यू आर ऑलरेडी ऑलवेज देयर। आपका होना ही मेरा होना है, आपका होना ही उसका होना है। कैन यू टेल दैट वर्ड्स? आई डोंट एक्सपेक्ट, ही इज, आई एम। इसलिए नहीं दुखी नहीं है हम। तो गुरुदेव एक दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा आज। जैसे लास्ट में जनरली देखा है ज्यादातर लोग बिस्तर पे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब जाने से पहले वो तकलीफ भोगते हैं, जहां तक मतलब मेजोरिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो कर्मों का भुगतान करना होता है वो ये भी वहां से निश्चित है हमारे गेम में कि हमें कब करना है। ये जरूरी है कि लास्ट में ही करे, चलते फिरते नहीं हो सकता, या उसको चेंज नहीं किया सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट फॉर दैट यू हैव टू अवेक। जागने के बाद क्या आप कहोगे कि आज मेरे सर में क्यों दर्द है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सर मैं नहीं हूं, तकलीफ में शरीर है। मैं ना कभी तकलीफ में था ना कभी रहूंगा। फिर हम देख रहे हैं, हम उस जगह पे जाते हैं, फिर इंसान बन जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे इतनी तकलीफ क्यों। अरे यू अगेन फॉरगॉट, यू अगेन फॉरगॉट कि सच्चाई क्या है। शरीर है, शरीर को खाना, कपड़े, मकान चाहिए। आपको कौन सा खाना, मकान और कपड़े चाहिए? बिस्तर पे कौन पड़ा है? शरीर पड़ा है। फिर आप शरीर हो तो फिर आप तकलीफ में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहते हो आप तकलीफ में हो, इसका मतलब आप शरीर बन गए। देखे, आसक्ति ही दुख और दर्द का कारण है। जिस समय आपकी आसक्ति शरीर के साथ जुड़ गई, उस समय शरीर की पीड़ा भी आपकी हो गई। शरीर में तो हूं मैं, इस घर में हूं, तो अपने आप को तो वो दीवार के साथ नहीं चिपका दूंगा ना। I just live in this house. I just roam around in this house. I don't say my house. I just stick to that. ना, leave it. फिर देखो, it would be, that's what is realization. और तीसरा सवाल भी है। आपने एक बार बताया था ये पीपल, बरगद जो बड़े बड़े होते हैं वृक्ष, वो योगी की तरह होते हैं। ओके, योगी तपस्या कर रहे हैं वहां बैठ के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भगवान जी की फोटो है, पीपल के नीचे रखा हो, जो भी है पीपल के नीचे रखा हो, ऐसा। तो हम तो ये गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, उसका रीजन है। हम कारण नहीं जानते। वाई वी डू दैट वी डोंट नो। किसी ने रखा इसीलिए हम भी रख दे के आते हैं, राइट? लेकिन हमको बरगद के पेड़ के बारे में पता क्या है? वी डोंट नो। हाँ,
तो अगर आप पुराणों की बात माने, इफ यू गो एंड लुक इनटू दैट, पुराणों में इसका वर्णन है कि जो ये वृक्ष है, ये वृक्ष में तीनों रूप, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप उसी में समाया हुआ है। और अगर त्रिदेव वहीं पे हैं और किसी को छोड़ना है तो कहां छोड़ोगे आप? उन्हीं के पास छोड़ दो। There is so many things. If I start talking only about पीपल का पेड़ के बारे में बात करूं ना, it itself is called as the kalpa vriksha. Or do you know it is also called as the tree of immortality? युगों से खड़ा हुआ है, उसके कई नाम है, उसे बहुपाद कहते हैं. इट हैज मेनी फीट. आपने देखा है कृष्ण का छोटी सी छवि कभी आप लोगों ने देखा होगा एक पत्ते के ऊपर? डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? पीपल का पत्ता ही होता है ना वो. मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव रियलाइज्ड इट, बट नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू, मैं जब बता रहा हूं आपको याद आया होगा कि यू हैव सीन सम फोटो ऑफ स्मॉल लिटिल कृष्णा व्हिच इज लाइंग ऑन ए लीफ. एक पत्ते के ऊपर है. व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स वन थिंग, कि जब कृष्ण छोटे थे, इन्हें अवतार, क्योंकि कई कल्प बीत चुके हैं. इन वन कल्प व्हेन कृष्णा वाज स्मॉल, प्रलय हुआ था. और प्रलय का जब पानी आया, देन कृष्णा वाज फ्लोटिंग ऑन दैट लीफ. उसे वट वृक्ष शयन कहते हैं. विष्णु का एक अवतार वो भी है, जिसमें वो बालक बन के बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं. उसे वट वृक्ष शयन कहते हैं. सो देर आर सो मेनी अमेजिंग थिंग्स अबाउट द पीपल ट्री. Because it is the tree of immortality, because we believe like all the three gods are available in that, उसकी पूजा की जाती है, right? और क्योंकि उसकी पूजा की जाती है, अगर आपके घर में कोई मूर्ति की आप पूजा नहीं कर पाए, अगर आप वहां रख के आते हो, कोई ना कोई उसकी पूजा कर देगा. तो आपने उसे छोड़ के नहीं आया कहीं पे, आपने उस जगह पहुंचा दिया जहां उसकी पूजा जारी रहेगी. इट विल कंटिन्यू, द वर्शिप विल बी कंटिन्यूड. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट. ये कलर का धागा बांधने से ये है, वो कलर का धागा बांधने से वो है. देर आर सो मेनी रिचुअल्स दैट वी डू. शादी नहीं हो रही तो एक, बच्चे नहीं हो रहे तो एक, रिलेशनशिप अच्छा होना है तो वो एक. देखेंगे किसी दिन एक सेशन ही उसके ऊपर ले लेंगे. पूरा बट वृक्ष के बारे में जिस दिन बताएंगे, देन विल कम टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट. अच्छा गुरुदेव, इतना तो ठीक है, हम मूर्ति रखा है उसके नीचे या मतलब पूजा की चीज रखा है, लेकिन जो मैंने देखा है चढ़े हुए फूल होते हैं, दीपक होते हैं, वो सब उसके नीचे डाल दिए जाते हैं, वो भी ठीक है? अब क्या ठीक क्या भूल रखने वाले से पूछना पड़ेगा. उसके लिए कहेंगे कि ये तो ऐसी जगह थी जहां पे मुझे जगह मिली इसलिए रख दिया. और एक बहुत अच्छी खासियत होती है सुधा जी, बरगद का पेड़ को आपने देखा है, अगर आप उसके पास जाके देखेंगे, उसके नीचे कोई भी पेड़ नहीं उगता. हैव यू सीन दिस? डू यू नो व्हाट डज दैट मीन? इट सेज द डे यू रियलाइज योरसेल्फ. जैसे बाकी पेड़ नहीं उगते, बाकी पेड़ों का मतलब क्या? लाइक स्मॉल प्लांट्स दैट विल नॉट ग्रो अराउंड इट. What does that indicate? That indicates a very amazing thing. It says you stand like an immortal. All in your standing, rebirths will not happen. आप जब चिरंजीवी हो जाओगे, तब आपके सामने वो जन्म मृत्यु की घटनाएं भी नहीं घटेगी जहां तक आपका विस्तार है. That's how, as long as it grows, you will find no trees growing around it. उसके नीचे एक भी पेड़ नहीं बनता, घास फूस भी नहीं उगते. Because it is an indication of new life, new life, new life, new life. It says once you become immortal, you are free of this also.
फ्री ऑफ कमिंग एंड गोइंग। उस पेड़ की उतनी महानता है, बट लॉन्ग लॉन्ग थिंग अबाउट इट। बाकी ये जो ये दिया रख के आ जाना, वो रख के आ जाना, वो सहूलियत है लोगों की। सोचते हैं कि सब यही रखते, मैं भी यही रख ही देता हूं। There is, we should think, right? As a, even if you have think like you are a human, you should know where to put it, where you not. So सुधा जी, जो रखते हैं उनको बोलिए कि यहाँ पे वो मत रखो, लेकिन आप बोलेंगे तो आप विलेन होंगे। नहीं, Choice विलेन is की बात yours. नहीं, गुरुदेव विलेन की बात नहीं है। दिमाग में ये रहता है ना, ये पूजा की चीज है, इधर उधर नहीं रखनी, मुझे पीपल के नीचे ही रखनी है ऐसा, या बरगद के नीचे ही रखनी है ऐसा दिमाग में रहता है ज्यादातर लोगों के, सबके रहता है। वही कहता मैं तो हूँ ना, मंदिर जाती हूँ, मुझे हाँ क्योंकि वहां पे कोई जाके चढ़ के उसके ऊपर नहीं बैठता। पैर नहीं पड़ते। हाँ, लॉजिक यही होता है कि वहां पैर नहीं लॉजिकल पड़ेंगे, थिंकिंग है वो। इसलिए यहाँ रख देते हैं। यस। लेकिन दूसरा वो लॉजिकल थिंग तो ठीक है, वहां रख देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ इतना ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर उठा के ले जाता है उसको। मुश्किल ये होती है, जो रखते हैं उनकी सोच तो सही है, वो ले कहाँ जाए। प्रोवाइड करने वाला बंद हो गया, वहां कर नहीं सकते हैं, तो उसका कुछ अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट है ना, पूरी पूरी पूजा मानसिक रूप से करो। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मंदिर में हाँ। भगवान जी बैठे हैं, वो कहते हैं आओ कुछ चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाओ हमारे ऊपर, नहीं लगेगा बेलपत्र चढ़ाई नहीं, हमने पूजा कहाँ की है। मैं तो कहता हूँ सुधा जी, कभी कभी बेल पत्र तोड़ने से पहले उस पेड़ के बारे में सोचा है कि उसकी फीलिंग क्या रही होगी। अगर आप शिव हो तो आपको उसका दर्द भी महसूस होगा, तो क्या तोड़ोगे, क्या चढ़ाओगे? तो कहूं कि इसीलिए कहता हूं ना, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, राम हमारा हमें जपे हम पायो विश्राम। ना मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगा ना ही धतूरा। तो शिव है, अगर उसकी भी दर्द तुझे पता है तो तुझे मेरी दर्द भी पता होनी चाहिए। इसलिए मेरी मानसिक पूजा ही तेरी सबसे अच्छी पूजा है। सही कह रहे हैं। उसको तो पता है, लेकिन जो फूल बेचने वाले बैठे हैं, बेलपत्र बेचने वाले बैठे हैं, वो क्या खाएंगे, उनको कहाँ पता है। ये बताइए। उनको उनकी एक तो रास्ता दिया है कि उनकी रोज ही वहां से चल कभी, रही। इसीलिए कहते हैं ना सुधा जी, कि कभी तो तुमको पता चलेगा, ये चढ़ाते चढ़ाते किसी ना किसी एक दिन तुम्हारे मन में भी ध्यान आएगा, ये जो फूल मैंने तोड़ के लाया उसको भी तो कष्ट हुआ होगा। उस दिन आप शिव बन जाओगे और उस दिन के बाद आपको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बात हर करेगा। महादेव। Thank you, Sudha ji. थैंक यू हरि जी। Ashwin ji, please unmute yourself. थैंक यू हरि भाई। प्रणाम मानस जी। प्रणाम अश्विन जी। First of all, like thanks for spreading your love, happiness, and sending your grace, gracing our family through our divine family, sending wishes to my mother, not naming individual, but thanks to Aliva ji, Aditi ji, Mahakal ji, and Ranit ji. Thanks to everyone. Manas ji, my question, simple. What is this Gupta Navratri, and why is it called Gupta? ओके, गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली डन फॉर तांत्रिक उपाय।
It is only known to certain kind of practices of people, those who do that. Just think of if you are a yogi, and just think of a time of Dashera, ya to Ram Navami. Okay. In these two times, everyone is busy in doing the puja. It is pura adambar ke saath hota hai, nahi? With lot of arrangements and all those things. But for a yogi, it needs silence to do its puja. Not the drums, not the sounds, not the noise around. For them, when they should do? So for them, they also have two Gupta Navaratras. And at times it also has 3. कभी कभी एक साल में 2 गुप्त नवरात्र और 2 नवरात्र आते हैं, तो 4 होता है, या तो कभी कभी 3 गुप्त नवरात्र आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेटरी मूवमेंट्स. And as this specifically is the puja of 10 Mahavidyas, it is not the 10 avatars of Durga, but of 10 Mahavidyas. महाविद्याओं की आराधना क्यों की जाती है? What is Mahavidya? Mahavidya means the one who has all the knowledge about that. और वो सब शक्ति प्रयोग होते हैं, जैसे स्तंभन हो गया, किलकम हो गया. I was talking about that elaborately yesterday, right? Yeah. So especially for वाम मार्ग, right? वाम मार्ग की पथाओं में ये गुप्त नवरात्र बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. दक्षिण मार्ग, we have राम नवमी kind of time. वसंत दुर्गा दूसरा होता है, जो नव दुर्गा की पूजा होती है. So those two are for the common people, and these are for the people, those who want to do Shakti sadhanas. And as it is a Shakti sadhana, it is not told. It is done in silence. इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहते हैं. And अक्सर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं रहता. It is the internet. You should be thankful that you are even able to know this. Or else just think of your childhood. Have you ever heard of this? Never. No. So at times I feel like some things are good on the net, and at times it disturbs all the things as well. But जिसको जिस तरीके से साधना करनी है वो अपने आप कर ही लेगा. And as I said, it's not about secret, it's secrecy. So depends. लेकिन उसने यही कहा ना कि मार्ग कोई भी चुनो, आओगे मेरे पास ही. चाहे आप नवरात्र करो या गुप्त नवरात्र, पाओगे मुझे ही. Ultimately, you are going to get that. और फाइनल वन, because ये तांत्रिक उपाय हैं, if people come to realize that these are very, very powerful times, you absolutely get connected with that source. Do you know, if I really call upon all these people sitting in the room right now, how many people have realized something yesterday? Then I think we have to like elaborate this session for another 2 hours, because their experiences will be so huge that it will take time. There is no need. But it is good that you people are able to do in whichever way you can. Okay? With your blessings, Manoj. Thank you. Thank you, Ashwinji. We are so lucky. We are so lucky. You can change that word from lucky to ready. We are so ready. We are so ready. You should not say we are so lucky. We are so lucky. You can say that. You can. We are so ready. We are so ready that we are here. Thank you. Thank you. Thank you, Harvey.
Thank you. Thank you. Now आगे देखो महादेव आगे महादेव. I came just to इतने दिनों से वो आवाज गिरी पड़ी. I have not been able to call that out. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ये सब तैयारी हो रही है शिवरात्रि की, मुझे लग रहा है. कोरस प्रैक्टिस. आज महाकाल से वो ज्वाइन करके आए ना, तो एकदम चार्ज अप है. Very good. The way he calls it out is mesmerizing. हर हर महादेव. हरि जी महादेव को लाइए ना, जैसे दीपिका जी ने कहा. एक मिनट. या फिर आप आ जाओ. अरे नहीं. एक सवाल है कि शिवरात्रि के लिए क्या करना है? Beyond the preparation, the readiness and the preparation. शिवरात्रि के क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को शिव बनाना है, ताकि वो रात्रि आपकी रात्रि हो और आप शिवरात्रि मनाए. It has to make you ready as Shiva, not waiting for Shiva, you becoming Shiva for that night. अगर सच में पूछो तो क्या करना है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, शिव बनना है. बट आपके साथ भी रहना है तो कहाँ आना है? प्लीज कॉन्टैक्ट श्रीपति हरिकिशन. देखो माया लीला सब उनकी, हम बस बैठेंगे. दैट्स इट. जी. That's how it is. दूसरी बात है कि with all these experiences shared today and all these whiles, एक चीज बस कहना चाहूंगी महादेव. I have also been very ritualistic. Not that I know a lot of things, but ये ऐसा ही रखना है, ये रेड के जगह ऑरेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, and all of that. Last 1 month that I have been away, and the infrastructure and everything is not that suitable, because in last 2 years being here, I've put a pattern, I have my own setup and all that. You know, every single day when I did, when I thought of you, when I fed you and you accepted, एक ही line आया. I don't know if I can say that correctly, but what you always say, कि मैं अगर कैलाश की तरफ ना जाऊं. Can you say that once? It came to me. It came to me. You know, it came to me. It said, it's okay. You are there. That's enough. तू सारे जहां का मालिक है. Yes. इतना करम मुझ पे कर दे, कैलाश के तरफ चल ना सकूं तो चलने के तरफ कैलाश कर दे. So that's how my path is. Because there is no path to Shiva. Shiva is the path. My destiny is Shiva. The way is Shiva. The one that carries to the destiny is Shiva. And the one walking towards him is also Shiva. Shivoham, Shivoham, Shivoham. बस चल पड़े हैं सब छोड़ के, and just absolutely becoming that. And how is it? How is the journey? Mesmerizing, right? Because nothing really is on me. When you do what you do, you just create magic. You can't fail, you can't fear, you can't have anxiety. Who am I? I just kept seeing.
COVID आया, COVID गया, काम आए, काम गए. Nothing really mattered. It was just blissfulness. And everything just happened, Mahadev. Everything just happened. Just this morning, Mahadev, I had this vision that I am sitting in front of, this portrait of Kishorji, and I wish, because she said, pranam se kuch nahi hoga, hug karna hai, kiss karna hai, samne hona hai. In few minutes, our dearest divine souls, Pranit ji, Aditi ji, Mahakal, it just happened, right? The simplest of the things, the complex of the things, the easiest of the things, you just make it happen. Why do we even bother? Why do we even bother? Because we doubt. No, there is no doubt. There is no doubt for this family. You are there. You're holding us. There is no doubt. And that's why we sing na Jatat abhi kalat jala prabah pa vipasthale. If I sing now, some people will not sleep. We don't want to. Please sing. Please. Let us have this then on Shivaratri for you. ये तो ट्रेलर था. Just one question. Or rather, jigyasa hai. There's no question anymore. Okay. Okay. If I'm allowed to ask this, हमारे महादेव और पार्वती का मिलन, वो story हम कैसे सुने? When do we hear that? That's one. Right? We need to hear this Shiv Katha as well. They never departed. Right. They never departed. That's it. So which story will you hear? Whatever you make us hear. Okay. So finally, this one goes for you and all in the room. Namami Samishana Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakashamakasabhasam Bhajeham Nirakara Vomkara Moolam Turiyam Giragyana Gotit Misam Girisam Karalam Mahakalakalam Kripalam Gunagara Sansara Param Natoham Tusharadrishangshasanam Gauram Gabhiram Manobhuta Koti Prabhashri Shariram Spuranmaulikallalini Charuganga Lasabdartha Balendu Kante Bhujanga Chalat Kundalang Bhusunetram Vishalam Prasannana Neelalakantham Dayalam Mrigadi Sachamrambaram Mundamalam Priyam Sankaram Sarvanatham Bhajami. That's how it goes. What happened? शांत हो गया सब? Everything just became still. Check yourself within yourself. अगर सब कुछ शांत नहीं हो गया है तो
And that's what I say. You can handle my words, you cannot handle my silence. You feel the rain? Feel like how beautiful it is there, that silence within, that's reverberating. It's echoing. It's not the words echoing, it's the silence echoing within you. This is bliss. So now go. Already 10:42. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you, Aribaji. I think we have one more hand, Manaji. Okay. Swati ji, please unmute yourself. हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव स्वाति जी। आज पहली बार मैं इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ। स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई क्योंकि आज आप सबके बातों में और जब आप सबसे बात कर रहे थे, जो आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, मैं महसूस कर पा रही थी हमारे पिता शिव जी को आप में। क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आपके जैसे इतना अच्छा गुरु मिलना सबका भाग्य है। स्वाति जी, सबकी तैयारी है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि ये लोग यहाँ हैं। सही में। इट इज देयर रेडीनेस। आपकी तैयारी होगी कि आप यहाँ आए और मुझे मौका दिया बात करने का। नहीं नहीं, ये तो हम मतलब ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। मतलब मैं बहुत छोटी हूँ। ईश्वर ने मुझे आज ये मौका दिया आपसे इतना अच्छा बात सुनने की। और जैसे आपने बातों में बताया था, फाइनली डेस्टिनी सबका एक ही होता है। सिर्फ समझने की जो तरीके हैं वो अलग अलग आत्मा के जो कॉन्शियस से डिपेंड होती है। ये बहुत जरूरी है। मतलब इतना अच्छा गुरु सबको मिलना भी भाग्य है। आज मुझे बहुत खुशी हुई। जनरली अप्पा जी है इस ग्रुप में, उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया, तो उन्होंने बताया था कभी भी आप समय मिले पहले आप ग्रुप में ऐड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, लोग तो मुझे कुछ लोग मेरे बातें सुन के कहते रहते हैं पागल है आप। मैं तो बोलती हूँ मैं शिव जी की बेटी हूँ। ऑफकोर्स सब हम शिव जी के बच्चे हैं, हम सब शिव जी के बच्चे हैं। फिर मैं मन में ऐसा आता है ये बाकी पागलपन से ये पागलपन मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई वॉज मैं ये हैप्पीनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट आई वॉज एबल टू सी माई, मतलब नॉट माई, आवर फादर्स वाइब्रेशन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपके ये सुंदर शब्दों के लिए। हम जो हैं हम वही दे सकते हैं। सही में। और अगर मैं अपने आप को इन लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकूं तो किसके सामने कर पाऊंगा? सही में। क्योंकि मैंने इनको कभी अलग नहीं माना। हाँ, ये कभी कभी मुझे अलग मान लेते हैं। नहीं नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। So that's why। तो आप सही जगह पहुंचे हो स्वाति जी। अगर आपको लोग पागल कहते हैं तो इन सबको भी वही कहा जाता है। तो नहीं, आप वो तो नाम आप एक बहुत बस्ती अच्छा में आ गए लगा। हो। Actually, मैंने बोला हाँ मैं पागल हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नाम दे दिया तो भी। कृष्ण को भी तो चोर लेकिन कहते हैं। उस पागल के वर्ड में भी मुझे हमारे पिता शिव जी ही दिखाई देते, कोई और नहीं दिखाई देता। कितना कितना अच्छा है स्वाति जी
किसी ने आपको दुनिया के लिए पागल नहीं कहा, लोगों ने आपको शिव के लिए पागल कहा। इससे बड़ा ओहदा नहीं मिलता। सही में। When people are called mad for the world, you are called mad for Shiva. What could have been better? Yes. So we are happy for that, and thank you for being here. Yeah, And धन्यवाद। surely you are most welcome to this family of mad people. And when you say mad, they laugh. And that itself claims that yes, we accept. Yes. And बहुत- Appa ji has been our second Jairaj ji. They इतने अच्छे just go इंसान हैं। on and on and on. मैं उनको ऑलमोस्ट 3-4 साल से देख रही हूँ। सच है, डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं। Nice. बहुत अच्छे इंसान। आप लोगों में वही देखते हो जो आप हो। क्योंकि सब में मुझे अपने माता पिता शिवजी पार्वती ही दिखाई देते। हम मेरे 2 भाई गणेश भैया सुब्रमण्य भैया ही दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे ध्यान होता है। That's what you are. धन्यवाद, धन्यवाद स्वाति जी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। जरूर, जैसे अपाराव जी ने कहा, कभी समय मिले तो जरूर जुड़िएगा इस फैमिली के साथ। हाँ, अभी जुड़ गई हूँ, अभी जुड़ने की बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। थैंक यू स्वाति जी। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। ये देखो, धवल जी बीच बीच में शिव जी का बारात, फिर शिव जी का तांडव, फिर शिव जी के गाने। चलो, सो थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, फॉर ऑल योर आंसर्स, फॉर योर प्रेजेंस एंड योर रेडीनेस। एंड till we meet again, keep your practices of being Shiva. So stay God and be God. अरे देखो, प्रणीत सबको आशीर्वाद दे रहा है, बोल रहा है कि जैसा आप बोले वैसा ही हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। So thank you so much. Till we meet again, remember to stay God and be God. And remember that word, asango nirvikalpo nirakara rupo aham brahmasmi.